हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक सा डायग्राम है दैट इज आर एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर एंड हम लोग इसकी वर्किंग देखेंगे इन द केस ऑफ एक्टिव रीजन व्हेन आर J1 जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड J2 जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हम देख सकते हैं दैट we have connected the negative terminal with the emitter and the positive terminal with the base, and we are calling this voltage as VEB. Similarly, for the reverse biasing case, हमने negative terminal को connect किया है with the base and positive terminal को connect किया है हमने with the collector, and we are calling this voltage as VCB. अब सबसे important parameter जो आता है हमारा that is biasing potential. So we know that in the case of forward bias हमारा biasing potential decrease कर जाता है. So if we denote biasing potential with VB, so after forward biasing हमारा biasing potential हो जाएगा VB minus VEB voltage. Now in the case of reverse bias, we know that कि जो हमारा biasing potential होता है वो हमारा increase कर जाता है. So उसकी value हो जाएगी VB plus VCB voltage. अब थोड़ी सी बात करें हम लोग about the base. So the base is very small and it is lightly doped. तो जो भी हमारा electrons का recombination होता है that is very less in the base area, and जितने भी हमारे electrons होते हैं since they have high velocity due to which they have high kinetic energy, तो majority electrons हमारे collector region की तरफ move करते हैं. If we talk statistically, so 2 to 5% electrons only exist in the base region, rest 95 to 98% electrons हमारे collector region में चले जाते हैं. And यहाँ पे एक हमने थोड़ा सा assumption भी लिया है that let us assume that n number of electrons हमारे exist करते हैं emitter में. So 1 minus alpha times n electrons हमारे base region में आएंगे and alpha times n electrons हमारे collector region में जाते हैं. Now we know that जब भी हम reverse bias की बात करते हैं तो reverse saturation current या फिर leakage current आता ही आता है. So यहाँ पे हम उसको denote करेंगे ICO से, where C is for collector and O is used for the open circuit. Now let us talk about the different types of current. So we are having three types of currents here. The first one is emitter current जिसकी डायरेक्शन ऐसे होगी. The second one is the base current जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी. And we know that the direction of current is always opposite to the direction of electrons. And third one is the collector current which is like this. यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So IC is equal to alpha times IE, where IE is the emitter current plus ICO which is the reverse saturation current. And by applying KCL in this particular part, we can say that IE is equal to IB plus IC, where IE is the emitter current, IB is the base current and IC is the collector current. So that was all for this video and I will see you in the next one.